Welcome to Ruperi Computer Science and Career Institute. TY Semester 6, Lecture of Subject Computer Systems and Applications. Our today's topic is Sales Commission and Total Earning Policy in Excel. So, today we write the answer of last question. That is, last lecture we solved the question in Excel on sales commission and total earning policy. The question is this. This is the question. This question is asked on Mumbai University question paper, April 2019. This question I was solved in last lecture number 3, practically in Excel. Now today we write the question's answer in theory. That is, when the question is asked in your university question paper, how to write the answer step by step. See in this solution. Therefore, solution. Now the question tells us what? Write step 2. First, calculate commission in column C using the following commission policy. That is, first rupees 50,000, 8%. Next, 75,000, 10%. Excess, 12%. That is, we have to calculate commission in column C. In column C, cell C1 already commission is written. Therefore, we select cell C2 and directly type the formula. Therefore, to first question, first answer solution, that is calculate commission. To calculate commission in column C. In column C. Now step 1, select cell C2. Step 1, select cell C2 and type the formula. Type the formula as follows. Right? Now, next line is equal if round bracket B2 less than 50,000 equal to 50,000, comma B2 star 8 divided by 100, comma if round bracket B2 less than or equal to 1,25,000, comma 50,000 into 8 divided by 100 plus B2 minus 50,000 bracket close into 10 divided by 100, comma 50,000 into 8 divided by 100 plus 75,000 into 10 divided by 100 plus round bracket open B2 minus 1,25,000 bracket close 12 divided by 100. Right? This way we have to write the formula. This already I was explained in Excel practically, and here also I now explain what exactly the formula is tell. See, there are 3 conditions are given in your question. That is, first 58%, next 75,000, 10%, excess 12%. Therefore, 3 conditions. Therefore, if will become here. Therefore, select cell C2 and type the formula is equal if B2 less than 50,000, comma B2 star 10 divided 8 divided by 100. This is your first condition is over, right?
Now next line tell us what? 75,000. Next 75,000. Next 75,000 means what? 50,000. Then after 75,000 means total how much? 1,25,000. Right? Therefore, if round bracket B2 is less than or equal to 1,25,000, in which first 50,000 is there, therefore 50,000 into 8 divided by 100 प्लस राउंड ब्रैकेट ओपन B2 माइनस वो 50,000 किया, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा रहेगा 75,000 ओनली, बराबर। अगर 1,25,000 B2 में है तो राइट, तो उसका हमें कितना दिया है 75,000 का 10%, राइट, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद हमें अभी थर्ड, जो कि सेकंड आपका कंडीशन अभी हो गया, अभी थर्ड कंडीशन के लिए एक्सेस के लिए हम लोग जाएंगे 12%। लेकिन एक्सेस मीन्स क्या है कि आपका जो टोटल सेल्स है वो 1,25,000 से भी ज़्यादा है, ऐसा एज्यूम करके जाना है हमें, राइट। तो उसमें फर्स्ट 50,000 तो आते हैं, उसका 8%, तब 50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 75,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 1,25,000 हो गया यहाँ पे। उसका हम लोग ने टैक्स ऐड करके रख दिया अभी, तो B2 माइनस 1,25,000 करने का, ब्रैकेट क्लोज और 12%, राइट। देन हम लोग को ये पूरा फॉर्मूला टाइप करके उसके बाद एंटर साइन निकालना है, जो कि ऐसा, ये एंटर साइन निकालना है, राइट। ये अभी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका। ये हम लोग ऐसा एक्सेल के सीट में C2 में हम लोग ये फॉर्मूला टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, राइट। अभी हमें क्या करना है, स्टेप 2 में वो फॉर्मूला कॉपी करने का प्रोसीजर बताना है। तो स्टेप 2 वंस अगेन, उसमें क्या है, अभी ये एंटर करने के बाद आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट सेल में जाता है ना, C3 में जाएगा। तो वंस अगेन आपको ये C2 जो सेल सिलेक्ट करना है, therefore step 2 once again select cell C2, right, activate the fill handle of cell C2 and drag till up to C7, cell C7, okay, over, okay। तो मीन्स C7 तक, C2 से C7 तक आपका वैल्यू अपने आप आएगा फॉर्मूला थ्रू, राइट। वी नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, टू कैलकुलेट बोनस। टू कैलकुलेट बोनस इन कॉलम D, bonus as 4% of the total sales in column D, right। Now step 1 क्या है, select cell D2, select cell D2 and type the formula as follows। Step 1, select cell D2 and type the formula as follows। तो हमें फॉर्मूला क्या लिखना है, इज इक्वल इफ राउंड ब्रैकेट B2 greater than 2 lakh, if is equal if B2 greater than 2 lakh, comma B2 star 4 divided by 100, comma 0 ब्रैकेट क्लोज, राइट। ये फॉर्मूला होने के बाद उसके बाद एंटर साइन निकालना है आपको, जैसे कि ये, राइट। अभी ये एंटर करने के बाद आपको वहाँ पे वैल्यू आया था एक्सेल में, बराबर। ये फॉर्मूला हम लोग ने एक्सेल की शीट में, जो कि वो D2 में कॉलम D और सेल C2 में D2 में हम लोग ने ये फॉर्मूला टाइप किया, एंटर किया, एज सून एज एंटर वी गेट द वैल्यू 4%, राइट, व्हाटएवर। तो ये जो है एंटर करने के बाद आपको स्टेप जो है सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, फिर से वो सिलेक्ट किया सेल, बराबर ना, क्योंकि वो सेल जो है D3 में चला गया, बराबर। तो वंस अगेन स्टेप 2, वंस अगेन सिलेक्ट सेल D2, एक्टिवेट द फिल हैंडल,
activate the fill handle of cell D2 and drag till up to D7. Okay. Now we calculate third question. To calculate total earning in column E. Now to calculate total earning is what? Is equal to step 1 now. Select cell E2. Select cell E2 and type the formula as follows. Just for type the formula is equal C2 plus D2. That is commission plus bonus, right? Is equal to C2 plus D2 and enter sign, right? Then next step, right? Step 2. Once again select cell E2, activate the fill handle and drag tail up to E7. Cell E7, right? This way we have to write the step by step answer, then you get full marks. Very easy to write these steps. You have to only particularly how to solve this question. Use your formula in very particular manner. Think over it and type the formula. Then the procedure you have to write. This procedure in step by step you write, then you will get full marks. This is very most important question. Many times these questions were asked in university question paper. In different ways they were asking this question. Only the numerical value were changed or the name of the employees or name of the persons were changed. The values, that is rupees, is also changed, but the structure of question to solving this way only, right? Therefore you can solve this question in whatever manner, and I have solved this in two ways also. Any one way you can use to solve this question. Okay, today is enough.